Student on hello student, on lecture 1 we have already read about the derivatives. Now in the second lecture we will have to learn two formulas of derivative, that is first and second term. If the question is given differentiate x to the power n, then we have to solve d upon dx x to the power n equal to n x to the power n minus 1, which is very clear. Again you have read that if given that sine x square d upon dx, then the formula will be sine, the differential of sine is cos x square, then again we differentiate d upon dx of x square, the answer will be cos x square into 2x. दिस इज कॉल्ड चेन डिफरेंशिएशन. चेन डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है या जो डेरिवेटिव होता है वो बाहर से अंदरगत होता है, मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. Let's see two more examples. d upon dx of sine square x. This power will can write as sine x का होल स्क्वायर. इसका मतलब सिर्फ बाहर पे क्या है, स्क्वायर है, उसके बाद साइन है. तो पहले करेंगे इस पावर का, फिर करेंगे साइन का. द डेरिवेटिव इज 2, पावर आगे आती है, एक कम करते हैं 2 साइन. समझिए, क्योंकि पावर आगे आएगी, यहाँ पे 1 बचेगा इनटू. अब फिर से d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स. क्लियर? अगेन वन मोर एग्जांपल, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर. अब नाउ देयर इज 2 power, one is on the whole, second is on the x square. Whatever it is there in place of theta, this all contain just as x. Suppose first derivative of this cube, then the answer is 3 sin square x square, because पावर में कम करते हैं, इनटू फिर से डेरिवेटिव करेंगे. इस बार करेंगे सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर का, पावर का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर. फिर से डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इनटू इसका 2x. द फाइनल आंसर इज 6x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स स्क्वायर. हियर I hope you understand this. This is called chain differentiation. The whole method is known as chain differentiation. First you have read simple differentiation. This is chain differentiation. Now in the second formula, if it is given that, listen very carefully, if it is given that x sin x, in the last question there is only one function, but here is two functions are given, x and sin x. So now we are going to use some formula. There is two term, which is first term and second term. The formula of, if we have to derivative d upon dx of uv, uv is a term, u is the first term, v is the second term, then the formula is u differentiate of v plus v differentiate of u. This formula you have to use, guys. So we solve this question like this: x d upon dx of sin x plus sin x d upon dx of x. Watch carefully. x d upon dx of sin x plus sin x d dx of x. जिस वैल्यू पे डी डी एक्स लगा होता है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि x एज इट इज साइन का cos x प्लस sin x. अब x का डिफरेंशिएट. ओके, दिस इज द आंसर. Let's take one more example. X square log x. Suppose this is first term, this is second term. Now we have to solve this with the property. So x square d upon dx of log x plus log x d upon dx of x square. Carefully. So x square log x का 1 upon x plus log x into x square हो जाएगा 2x. Now this x can be cut, x can be common, so 1 plus 2 log x.
I hope you will get it. The formula, this is called multiply formula. Up there is one more, it is division formula. Means if question is given x upon sin x, because the trigonometry we can write it down x cosec x, but for to understanding this we will solve like this, x upon sin x. So numerator and denominator, the formula upon ddx of numerator upon denominator. One more thing you have to remind, that the formula is only applicable for both the functions of x or y or t, whatever it is given. मीन्स अगर एक कांस्टेंट है और एक वैल्यू एक फंक्शन है तो वो काम नहीं करेगा. सपोज अगर यहाँ लिखा होता 5 sin x तो इससे कोई मतलब नहीं होता. अगर लिखा होता a sin x तब भी इससे कोई मतलब नहीं होता. अगर दोनों सेम फंक्शन है तभी उससे मतलब हो पाएगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. अगर साथ में कांस्टेंट लिखा हुआ है तो देयर इज नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड. ओके, दिस इज द जनरल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. सो फॉर्मूला डिनोमिनेटर ddx of numerator minus numerator ddx of denominator upon denominator whole square. Clear? Let's start. तो इस for this question sin x ddx of x minus x ddx of sin x upon sin x whole square. So sin x x का 1 minus x sin का cos x upon sin x whole square. Okay, I hope you will get it, the formula very clearly, both the formula. This is first formula uv, this is the second formula numerator upon denominator. So guys, please solve the exercise by helping this formula and also this by using this. This is called chain differentiation. Thank you very much.